guys, how are you? I hope you are all guys doing very well. So today we shall talk about when we will speak in English in front of anyone laughed on you while speaking English. Okay friends, so most of the people have this problem, and most of the people face this problem if they will try to speak English in front of anyone. So they will face this problem, most of the people. So how will fix it this problem? How how will fix this problem? Guys, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, और इतना ये ज़्यादा एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं आ सकती है। हाँ, वो लोग जो बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे टूटी फूटी कैसी भी इंग्लिश आती है, अगर वो बोलने की कोशिश करते हैं और अगर उनके सामने कोई व्यक्ति उनका मजाक उड़ाता है, कोई हंसता है, तो गाइस थोड़ा तो बेशरम बनना पड़ेगा, क्योंकि हंसते भी वही लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। जो कुछ करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा दूसरे से बेहतर होते हैं। तो कीप इन योर माइंड these things, whatever they will think, whatever they will say, whatever they they will laugh on you, you keep in your mind two things. You keep trying speaking English, okay? Never give up. Don't care about others, whatever they will say, whatever they will laugh on you. You have focus on your goal. You have focus on your goal. I mean to say, if you are if you have a target, if you are set your goal one month and 2 month, after 6 months you have become a fluent speaker. So you keep continue trying and कीप प्रैक्टिसिंग. डोंट केयर अबाउट कि लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे. अगर आप दूसरों से कुछ अलग करने की बेहतर कोशिश कर रहे हैं तो आप अलग ज़रूर बनेंगे. जो मजाक उड़ाता है उड़ाने दीजिए. एटलीस्ट आप कोशिश तो कर रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो ये प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा अगर आप किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं. ठीक है, तो डोंट केयर अबाउट. And second things, don't compare yourself to others, कि उसको तो इतनी अच्छी आती है, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं आती है इंग्लिश. अगर मैं उसके सामने बोलूँगा तो मेरा मजाक ही उड़ेगा, इससे अच्छा मैं बोलता हूँ नहीं, बोलूँगा ही नहीं. नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. अगर वो आपसे अच्छा है तो उसने कोशिश की है, तभी वो आपसे बेहतर बना है. तो आप कोशिश करेंगे तो आप उससे भी ज़्यादा बेहतर बनेंगे. सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. कीप इन योर माइंड. एंड थर्ड टिप्स, never ever stop your English practice. Understand? So guys, never stop your speaking practice, because of speaking practice is very most important in this journey. If you are set your goal after 6 months and after 3 months you have become a good speaker and fluent speaker in English, so never stop your speaking practice. Understand guys? And one thing I will share with you, if you are not motivate yourself, so nobody can motivate you. This things is keep in your mind. Okay guys, so if you are not motivate yourself, nobody can you. If you are set your goal, only you do yourself. Okay, you can help yourself, nobody can help you. So please, if you are like this video, so please like, share and subscribe. Your one like and one subscribe, I have a great
myself and increase my confidence. So I hope you are like this video. So please like, share and subscribe. Thank you.